एंड गुड इवनिंग। किसी भी वॉर के लिए हमको राइट वेपन्स तो चाहिए ही होते हैं, बट उसके साथ साथ स्टडी भी चाहिए होती है और टेक्निक भी चाहिए होता है। और डेली बेसिस पे आपको हम थोड़ा थोड़ा अपडेट तो करते रहते हैं, बट ये वीकली राउंडअप से हम हमारा ये जो इन हाउस वेपन है उनसे आपके लिए टेक्निक निकालते रहते हैं। लास्ट वीक भी एज ए के टोल्ड अस 24,600 का डाउन साइड है, 25,200 का अपसाइड है, इसके बीच में सब कुछ चलता रहेगा। Today in the morning I thought he will go wrong, but time and again, you know, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, गलत नहीं जाते हैं, तो वापस हम उनके पास ही जाते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स ब्रिंग हिम इन और समझते हैं कैसा था वीक और क्या होने वाला है आगे। हाय हाय अंकित, गुड Hi, इवनिंग hi, एंड good evening. Good evening. कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much. Thank you. Hmm. यू हैव अगेन प्रूव्ड इट कि हमें वीकली राउंडअप में आपसे सीखना ही पड़ेगा कि वीक में क्या होता है। तो हाउ वाज द Nice. वीक? आई एम प्रीटी श्योर इट वाज अमेजिंग फॉर यू। Yeah, it was. I would not say amazing. It was, yes, very much in line with my expectation. राइट। I'm very happy with the movement. What happened because Rachit, if you notice, last 2 weeks से ये week और इससे पहले वाले week से uh, जो drastic movements हैं वो कम हो गए हैं या खत्म से हो गए हैं. So that is a very very important phase for markets to go up. That's like a pre phase, consolidation phase. Consolidation continue हुआ है इस week. I'm very happy about it. Like if you remember, like you mentioned, my last video, I gave a range of 24,600 and 25,200 on the top. This is of course a very technical range, and in the absence of triggers it should trade in between. So which is what happened. So अगर आप ये वीक देखें तो मंडे ट्यूसडे थोड़ा अच्छा था. बिगिनिंग में आप समझिए 25,200 तक निफ्टी गया था ऊपर, बट ट्यूसडे सेकेंड हाफ onwards all the way till Friday we saw one side down movement, and Friday itself, because of the gap down, it even broke down before below 26 4600. राइट। तो वीकली लो 24,572 बन गया है. But sharp bounce back, like I told you, that 600 is a very strong support level. So sharp bounce back was seen. Ankit, one thing that I would like to add in this, when we talk about, say, a week time, a fortnight time, or we initiate a trade, we usually take the technical levels on the closing basis. So even if you're trying to be modest that the Nifty went below 24,600, but then at closing, if it was up, so it eventually was up. So I don't think, that thing really matters, because that was just an intraday blip, I believe. Yes, you're right, you're right. In fact, अगर वो फॉल सस्टेन आज कर लेता निफ्टी, तो सिनेरियो काफी डिफरेंट हो जाता. Right. uh, I would no I let's not talk about what could have been. Let's just talk about what has happened and what is possibly going to happen. So Right. yes, it went down to 24,576 or something, which was weekly low, and then sharp recovery we have seen today. 24,800, 854 actually the closing today. Right. So overall अगर आप वीक ऑन वीक पूरा देखें चार्ट, तो स्टार्टिंग और एंड में ज्यादा फर्क है नहीं. वीक में हमने 200-300 पॉइंट ऊपर देखा, 200-300 पॉइंट नीचे देखा करके वो हो गया. गुड थिंग, volatility has in its extreme corners touched 13 and a half or 14 on the top and 12 and a half at the bottom, and on Okay. the median if you take it, it has hovered around 13.2, Right. pure week. So that is again a very very good sign that yeah, now that consolidation is in progress. Now Mm-hmm. speaking on specific events this week, results have started pouring in, as you must be reading a lot about Right. it. Some of the big results came in this week.
Hmm. And matlab contrary to what I thought would happen, the results are now kind of subdued or mixed bag, uh, Hmm. not something which is you know which is a trigger enough to push the markets up. तो Right. अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो बजाज ऑटो वाज क्वाइट अ हाईलाइट ऑन थर्सडेज ट्रेड. A lot of concern over the slowing demand has been voiced. Also, above, if we talk about the result, the net income was up 9.5% to 2,000 odd crores, and estimated was about 2,200 crores. Hmm. So it has missed its estimates, and the revenue got इतना बड़ा मार्जिन से मिस नहीं किया है. रेवेन्यू भी ऊपर ही थी, 22% रेवेन्यू ऊपर थी 13,130 करोड़ पे, against 13,245 crores expected revenue. Right. But the stock got punished brutally. Hmm. If Thursday's trade itself, Bajaj Auto fell down 13%. Right. So this itself proves that we were at a very lofty, frothy kind of valuation. तो बेसिकली जो जो अचीव कर सकते हैं उसके ऊपर भी, ऊपर की मलाई जो बोलते हैं ना, वो मलाई पे वैल्यूएशन चल रहा था. तो Right. it had to shed all of that extra, so Extra which is fat what. has to be taken out. Exactly. So basically, इतना खराब रिजल्ट नहीं होने के बावजूद स्टॉक हैज बीन पनिश्ड that Hmm. badly. Infosys, if you take the example, yesterday Infosys gave in the results. The results were very much in line with expectation. It has dropped most in 2 months as of Hmm. today's trade. Right. अगस्त के बाद अब जाके ये अब इतना हो गया. In fact, Infosys has given good guidelines, better guidelines Hmm. for the coming quarter. In spite of that, it has dropped so much. Again, this proves that we were trading on a very lofty, foamy kind of valuations. हम एक Right. एक्सेस में ही ट्रेड कर रहे थे, तो वी आर लूजिंग दैट एक्सेस, Hmm. which is a very good thing. मतलब जिसको बोलते हैं मार्केट करेक्शन in its true sense of the word, corrective. Hmm. We are taking a corrective measure, getting closer to the actual fair value rather Right. than keeping a lofty kind of thing. Reliance again, second quarter in a row has been subdued, disappointing kind of results. So all of this adding to FII sell off. Hmm. FIs have been largely, on the selling side in this Right. month, and इसकी वजह से बेसिकली बाजार में थोड़ी डाउनसाइड है. और जो हमने देखा, जो मूवमेंट है, बेसिकली द रीजन वाज दिस ओनली, that the FI selling was there. So so that is a good reason to believe that ये जो so I'll slowly drift into the week coming next, because we have already started talking about what is going to come. Right. So week coming next, I expect consolidation to continue. Okay. It will be great if consolidation continues. बट जो डिफरेंस है पिछले वीक और इस वीक में, मुझे Hmm. आगने वाली वीक में बायस थोड़ा पॉजिटिव लगता है. वन ऑफ द रीजन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन है मार्केट में जो कवर Hmm. होनी बाकी है. वो जैसे हम एक्सपायरी की तरफ जाएंगे वो धीरे धीरे कवर होगी. मैं बोल रहा हूँ पूरी नहीं हो, अगर 20-30% भी अगर कवरिंग हो तो बाजार Right. खींच लेगा, बाजार खींच लेगा. ठीक है. दूसरा ये रीजन है दैट वी हैव क्लोज दिस वीक ऑन अ टेक्निकली साउंड जोन, Hmm. टेक्निकली स्ट्रांग. अगर हम डीएमए और ये सब देखें तो हम Hmm. एक अच्छे लेवल पे हमने बंद किया है. At so we can, I am not saying there'll be a gap up, gap down, major movement and all that, but जिस तरह से एक 400 पॉइंट का रेंज में मूवमेंट इस वीक हुआ है, उस तरह Hmm. से 400-500 पॉइंट की रेंज में मूवमेंट नेक्स्ट वीक भी हो सकता है. आई ओनली Okay. एक्सपेक्ट दिस रेंज, व्हाट आई सेड, नीचे बॉटम आउट मैंने जो आपको 24,600 बोला था, इस वीक शायद 24,800 बॉटम हो, और Okay. अपवर्ड साइड 25,500 हो सकता है. मतलब बेसिकली मैंने पूरे रेंज को 200 पॉइंट ऊपर कर दिया और कुछ नहीं. मूवमेंट सेम होगा, वॉलेटिलिटी हो सकती है,
ना हो तो अच्छा है, वॉलेटिलिटी हो सकती है। अगर 13-14 पे विक्स रहता है तो कोई इशू नहीं है, कंसोलिडेशन बहुत बढ़िया जा रहा है। 200 पॉइंट ऊपर है तो 200 पॉइंट ऊपर में ट्रेड करे, कोई उसमें चिंता की बात नहीं है। इट इज वेरी गुड। Results also, like from what I have seen, most companies have missed estimates on one or two data points Hmm. with a margin of 5, 7, 10%. Not much, not a Right. great miss. Nobody is, none of these big companies have given a kind of a shocker. Hmm. So I am not expecting that thing to play a big negative trigger for the market. हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक अगर कोई शॉकर आता है तो मे बी दैट स्टॉक माइट टेक द बीटिंग। फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो, इट हैपेंड, Hmm. वैसे हो सकता है। बट Got it. ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में। So I believe, how do we summarize it? We summarize it like this: that because of results or any such kind of data points, there might be a stock specific volatility, just like it happened in Bajaj Auto. But then we are still in the range of consolidation, and probably the range has been shifted to some 200 points plus. Now we might see a bottom somewhere near 24 800 or 24 750, and top side would be 25 400 or 25 350, around those levels. But we are still in the phase of consolidation. Is this something that we should That is understand and play with it in the coming week? that is perfectly put. राइट, राइट। चलिए, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। और Likewise. हमेशा अब हमें लालच बना रहता है आपसे बात करने का, एंड दैट इज द रीजन आई एम आउटसाइड, आई एम सिटिंग इनसाइड माय कार एंड टॉकिंग टू यू, so that the entire video goes on in time and the people can watch it before No, the week starts. but Rachit, that is really hats off to you and your commitment towards giving this out every week to our subscribers and followers. Because आप कहीं भी होते हो, ऑफिस के बाहर कहीं पे भी, on the move, you are always ready to make a quick video and put it out. So And that is that's specifically commendable. weekly roundup, because I have my personal interest in that weekly roundup. I also play along, so I get a guidance as well. Chaliye, it was amazing talking to you, and Right. hope to see you next week and continue with Sure. our episodes of weekly roundup. Sure. Have a good Right. weekend. Yeah, same to Okay. you. Bye Thank you. bye. Bye bye.